सफीर पाकिस्तान, आपके जज्बों का तर्जुमान। वतन से दूर, वतन की आवाज और आपकी पहचान, सफीर पाकिस्तान। Pakistan will need our help to rebuild. Between Pakistan and the United States, this is the time to act and to act jointly. Safir Pakistan has come a long way in bringing the Pakistani-American community together. Safir Pakistan is doing a great job. Thank you, Safir Pakistan, for the amazing work that you do. The media plays a central role. He performs incredible duties to the community of Pakistanis in America. समाजी, सखाफती, इस्लामी, Safir Pakistan for this honor. Safir Pakistan has done tremendous work. I'd like to thank Waqar Ali Khan and Safir Pakistan. I truly am very thankful for Safir Pakistan and Waqar Saab. Safir Pakistan all the best. हर जगह, हर पल आपका अपना सफीर पाकिस्तान नजर आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान वक़ार अली ख़ान प्रोग्राम सफ़ीर पाकिस्तान के साथ हाज़िर खिदमत है। कहिए कैसे मिजाज हैं सफ़ीर पाकिस्तान, आपकी आवाज़, आपके जज्बात और आपके एहसास का सही तर्जुमान, सफ़ीर पाकिस्तान। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान देखती रहिए और कम्युनिटी से मुंसलिक होते रहिए। राब्तों का एक नाम है सफ़ीर पाकिस्तान, आपकी दिलों की आवाज़ भी सफ़ीर पाकिस्तान ही है। नाज़रीन, सफ़ीर पाकिस्तान माशाल्लाह बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ने वाला प्रोग्राम है और ये सब कुछ समर जो है आप लोगों ने दिया है, क्योंकि आपकी डेडिकेशन, आपकी पसंदीदगी, आपकी चाहत, आपका ताउन, आपकी सपोर्ट ही ने सफ़ीर पाकिस्तान को बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। सफ़ीर पाकिस्तान में आज बहुत कुछ शामिल है, रिपोर्ट्स चल रही हैं काफ़ी। आपको पता है कि अपना के इलेक्शन भी बड़े ज़ोर शोर से जारी हैं, समर मीटिंग की भी बड़ी ज़ोर शोर से तैयारी है। वाशिंगटन डीसी में सायमा ज़फ़र बहुत मेहनत कर रही हैं इस प्रोग्राम को कामयाब तर बनाने के लिए और इसको न्यूट्रल करने के लिए, ताकि एक ऐसा प्रोग्राम वाशिंगटन डीसी में पेश किया जाए जो बहुत दिनों तक याद रखा जाए। मुझे उम्मीद है कि वो इसमें कामयाबी से हम किनार होंगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने कुछ रिपोर्ट शामिल की हैं रिचमंड वर्जीनिया से, और हमारा रिचमंड वर्जीनिया जाना हुआ था, वहाँ उनके चैप्टर की मीटिंग थी। आपको पता है कि आजकल हम सफ़ीर पाकिस्तान एक्सक्लूसिव तरीके से इलेक्शन की कवरेज कर रहा है ताकि तमाम तर कैंडिडेट को मुतारिफ़ कराया जा सके नाज़रीन से और उनके मेंबरान से, क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है और हर तक पहुँचना इनका काम भी नहीं है। नाज़रीन, जैसा आप जानते हैं कि ऑरलैंडो में जो डिबेट हुई थी, अब उसकी एक लहर चल चुकी है और अब उसको लोग फॉलो कर रहे हैं और दोगाना इसमें ट्रेंड सेटर की हैसियत इख्तियार कर गया है। मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई और बड़ी यानी कि सरप्राइज़ भी हुआ कि जब उन्होंने ऐलान किया कि आज हम भी एक मिनी डिबेट करेंगे यहाँ पे, और वो ट्रेडिशनल 3 मिनट की तकरीरें नहीं होगी जिससे कुछ पता नहीं चलता है कि आपका एजेंडा क्या, आपका कॉन्सेप्ट क्या है। रिचमंड वर्जीनिया में होने वाली डिबेट छोटी सी थी लेकिन तवील थी, वो भी आज के प्रोग्राम में हमने शामिल की है। इसके अलावा ऑफ कोर्स कैमकाना का फंक्शन डैलस में हुआ था और हमारी बहुत ही हिट दिल अजीज़ और बहुत ही एक अच्छी कारकुन है अपना की, और वो अब किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की जो अलमनाई है उसकी वो चेयरपर्सन है, उनका नाम है आयशा ज़फ़र। मैंने कई बार उनसे मुलाकातें की हैं, उन्होंने कैंसर के प्रोजेक्ट पे भी काम किया है, ब्रेस्ट कैंसर पे भी काम किया, मुख्तलिफ वेलफेयर के प्रोजेक्ट में वो काम करती रही हैं। बड़ी खामोश किस्म की सिपाही हैं वो अपना की, और मैं उनको सलाम करता हूँ। आयशा ज़फ़र, यू डूइंग ग्रेट जॉब एंड यू विल डू ग्रेट जॉब इंशाल्लाह। तो उनकी ज़ेर सरपरस्ती बहुत ही अच्छा और बहुत ही आला प्रोग्राम हुआ डैलस के अंदर, तो वो भी रिपोर्ट आज के प्रोग्राम में हमने शामिल की है। इसके अलावा नाज़रीन, हम जानते हैं कि सफ़ीर पाकिस्तान की अवार्ड नाइट 8वीं जो है वो इस बार डैलस में मुनक्कद हो रही है, और ये प्रोग्राम हमने बहुत ही डोमेस्टिक रखा है ताकि हम डोमेस्टिकली जो है लोगों को इंट्रोड्यूस कराएं और वहीं के फ़नकार हों और अमेरिका में रहने और बसने वाले ही
हमारे की नोट स्पीकर और चीफ गेस्ट हों, ताकि हमें पता चले कि हम एक फैमिली है, हम एक ख़ानदान है। तो इस प्रोग्राम में माशाल्लाह ये रंगारंग प्रोग्राम है और मुख्तलिफ़ शहरों से कामयाब तरीन लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। और मैं अपनी टीम जिसमें डॉक्टर आरिफ जमाल, अंबर, नाहिद, राहिल, तस्नीम आगा, जावेद सिद्दीकी, असलम ख़ान, मिस्टर बरकत बसेरिया, जिन्होंने बहुत ही आगे बढ़ के इसको सपोर्ट किया है। और मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम उनकी मेहनत से, उनकी सपोर्ट से बहुत आगे बढ़ेगा और इंशाअल्लाह ताला ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम हम डैलस को लेकर आएंगे। और इस बार डैलस जो है पूरी दुनिया में मुतारिफ हो जाएगा। और ऑफ कोर्स यही सफ़ीर पाकिस्तान का जो है एक प्रोजेक्ट है और यही हमारा एक मंसूबा है कि हम डैलस के लोगों को दुनिया भर में मुतारिफ कराएँ। नाज़रीन, आज तमाम रास्ते सिर्फ एक ही मंजिल को जाते हैं, वो है DFW मैरियट होटल, जहाँ पे कामयाब तरीन लोग आज जमा होंगे उस हाल के अंदर। और बहुत ही कामयाबी का मुजाहरा होगा, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम होगा, रंगारंग प्रोग्राम है। इसमें टॉप के म्यूजिशियंस आ रहे हैं, सिंगर्स आ रहे हैं जो अपनी सलाहियतों का भरपूर मुजाहरा करेंगे। नाज़रीन, तो आइए देखते हैं पहले मरहले में कैम खाने की मीटिंग डैलस से, और जिसकी प्रेसिडेंट है आयशा ज़फ़र। और वहाँ पे यह है कि साइमा ज़फ़र भी मौजूद थी। ये दोनों बहनें हैं और इनकी जो वालिदा हैं माशाल्लाह वो सीनियर प्रोफेसर और टीचर रह चुकी हैं मेडिकल कॉलेज में। उनके बहुत सारे शागिर्द भी हैं पूरे अमेरिका में। तो नाज़रीन, आइए देखते हैं ये खुसूसी प्रोग्राम। मुझे उम्मीद है कि इस प्रोग्राम को आप इंजॉय करेंगे। मुरादा फरमाइए ये रिपोर्ट। वो लम्हा आप पहुंचा है जिसका आपको इंतजार था। वो लम्हा आ पहुंचा है जिसका आप सबको इंतजार था। सफीर पाकिस्तान अवार्ड नाइट 2012। आया कहाँ से ये हौसला रे, उड़ने लगा क्यों मलबाबरा रे, आया कहाँ से ये हौसला रे, और पिया उस्ताद दिलशाद खान प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड विनर वायलिनिस्ट। सब कुछ DFW मैरियट होटल, ब्रोथ हफ्ता मई 19, 2012। हमें आपका इंतजार रहेगा। रीमा जी बताइए कि माशाल्लाह वैसे तो अमेरिका में आपकी कभी काफ़ी पजीराई हो रही है और बड़ा आपको लोग पसंद कर रहे हैं। द वे यू टॉक, द वे यू मीट विद द पीपल, एंड आपकी जो है
अदायगी, मिलनसारी बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। और अब आप सफ़ीर पाकिस्तान की जो अवार्ड नाइट है उसमें आपको बहुत ही बड़ा एजाज़ दिया जा रहा है डैलस के अंदर। टेक्सास जो है सबसे बड़ी स्टेट है अमेरिका की, तो उसके बारे में क्या राय है आपकी डैलस के लिए और टेक्सास की कम्युनिटी के लिए, क्या पैगाम आपका? सबसे पहले तो मैं सफ़ीर पाकिस्तान और उनकी पूरी टीम का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए इस अवार्ड के हवाले से मेरे नाम का इंतखाब किया। बहुत खुशी है और अपनी खुशी अपने अल्फाज में मैं अभी बयान नहीं कर सकती। ये जब मैं अवार्ड लूँगी तो डेफिनेटली मैं अपनी तमाम खुशियों को आप सबके साथ शेयर करूँगी। और टेक्सास के जितने लोग हैं उन सबको मेरा बहुत ही प्यार भरा सलाम। आप लोगों ने जितनी मोहब्बत से मुझे वेलकम कहा है अमेरिका के अंदर, आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए भी मेरे पास आई थिंक अल्फाज कम पड़ जाएंगे। तो आप सबसे मिलने के लिए मैं टेक्सास आ रही हूँ और इसका मेरे आने का जो क्रेडिट है वो सफ़ीर पाकिस्तान को जाता है कि जो इतनी खूबसूरत शाम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं खूबसूरत टेक्सास के अंदर, जहाँ पर हम सबको मिल बैठने का मौका मिलेगा। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी 19 तारीख को सफ़ीर पाकिस्तान की अवार्ड सेरेमनी। We had a good CNE program, and I'm sure you will enjoy the rest of the evening with music with Jawad Ahmed from Pakistan. The North Texas chapter of APNA is very pleased and honored to host the Kempana retreat. It is a matter of great pride for us that such distinguished people from all over the United States are here tonight in this very significant gathering. Just a couple of points that I would like to make. Number one, that it is if you look at great institutions, academic institutions, especially healthcare facilities, their success can be measured by the impact that that facility has on the health and well-being of people and humanity. When you look at KE Medical College, and when you look at the KE University now and its alumni associations, you see KE graduates spread all over the world. And even when you are 10,000 miles away from the institution, you see the lives of people being touched by KE graduates. We stand united in your achievements, in your success, because we feel that the success of KE's alumni is the success of our community and our dear beloved APNA. Say, can you see those broad stripes and bright stars through the perilous fight? As you know that APNA started about 35 years ago, and it was created with the mission of providing healthcare, charitable activities within the United States and around the world, nurturing young physicians, and promoting the name of Pakistan and goodwill within the United States. A clinic committee which is actually trying to create and establish pre-healthcare clinic committees across the United States. And our goal is to have at least 5 to 10 committees, clinics across the United States
where at least on the weekends or twice a week we can provide free health care to anybody from any ethnic background across the United States. So as we move on this year, we're moving on to the summer meeting, which will be in Washington, D.C., and I would welcome you all over there. We have a fantastic entertainment program, fantastic meeting. We're having advocacy for the young physicians. We're going to reach out to the State Department, to the White House, to see what they can do in helping our young physicians come to the United States. We're having significant problems with getting their visas, and so everybody's help is required in that particular aspect. At the end, I'd like to say that thank you for being a part of Apna. Please continue to participate. Everybody's talent and passion is more than welcome and can create a wonderful world for Pakistani Americans in the United States. I do want to recognize my executive committee, so they can, I'm going to start with Dr. Tariq Jaleel, Dr. Aisha Najib, Treasurer, Dr. Ahmed Mehdi. Tonight we have a small presentation. We have invited financial planners from Wall Street Alliance Group, who are one of our sponsors, and they conduct financial planning for many doctors, especially in Pakistani physicians. Please welcome Sayyid Nishad and Adil Zaman, Senior Vice Presidents from Wall Street Alliance Group. All of us left the comfort of our homes in Pakistan, and we came to the United States for one reason. And that reason was so that we could give our children a better future, a better opportunity. Proper financial planning is the foundation for providing our family stability. Just to give you a simple example, if you invested $50,000 in the stock market in the year 1960, that $50,000 today would be worth almost $5.4 million. If you have a 3-year-old and you invest only $500 for him every month in a college 529 plan, assuming an 8% per year rate of return, by the time your child is 18 years old, you will have a savings balance of about $173,000, which should be enough to pay for his entire college. I would like to thank you very much for your time. We are going to be around for the next couple of hours, so if you have any questions, please feel free to come up to us and ask us. He is President and CEO of Mosley, as well as Carrier.com and Accelera Broadband, which are Mosley subsidiaries. We are honored to have him join us this evening, and it gives me a great pleasure to invite Jamal Bhai to the podium. Katie has a very special meaning for me, as you've been told. My father was a graduate of Katie, and frankly, he would have been very proud to see the success that all Katie alumni have accomplished, particularly those of you in this country. In terms of creating impressions in your community and countering this negative stuff that goes on, network, get involved. Get involved in the political system. Volunteer for the Parent Teachers Association. If you're not out there in the community, how are you going to counter and change that? Get involved. Be a good role model. Carry yourself with the responsibility that you need to be a good Muslim, a good Pakistani, so that you can point to someone and say, hey, that guy's a good guy. Why are we putting all this blame about these guys for? Make that effort. But if you're going to stay at home and with all due respect, all you're interested in Musharraf and all that stuff, right? But they're not going to come to those. Right? So make a change and make an effort. So don't buy conventional wisdom, even if it's on sale. Okay. One person can make a difference. Follow your dreams. Strive for excellence. Be successful, but make other people even more successful. King Edward Alumni जो है ये it was started in 1975 और हम लोगों के बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हम पाकिस्तान में भी कर रहे हैं और यूएसए में भी कर रहे हैं। और पाकिस्तान में हम अपने कॉलेज में हमने स्कॉलरशिप्स किए हुए हैं, हमने वहाँ पे कंप्यूटर लैब शुरू की है और फिर जब फ्लड्स आए थे तो वहाँ पे कोटद्दू में एक जगह है, उसका नाम फारूकाबाद है गाँव, हमने वहाँ पे 100 घर बनाए, हमने वहाँ पे वोकेशनल रिहैब सेंटर बनाया। तो ये तो हमारे पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स हैं। और अमेरिका में जो हमारे वहाँ से पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स आ रहे हैं उनके लिए हमने यहाँ पे अकोमोडेशन उनको प्रोवाइड की है और एक जगह उसका नाम केमकाना हाउस है जो हमने फिलाडेल्फिया में बनाया है। तो इस तरह की बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग कर रहे हैं। Thank you so much. First of all, let me just say on behalf of host committee and Kemkana,
I would like to thank Safir Pakistan for arranging this presentation. I must say that this is a very nice occasion for all the Kemkolians, the King Edward Medical College graduates, that they gather once a year. And this tradition started in 2006, and again it was started in the same hotel in Dallas in 2006. This gives an opportunity to connect with each other, socialize, and discuss many projects that we do for people in Pakistan and some of the projects in the US. I must say this has been a collaboration between the Kemkana and also the North Texas chapter of APNA. So Dr. Hassan Hashmi, who is the president, and his whole team was also supportive during this event. So as you can see, this has been very successful. We're looking forward to the last part of the event, which would be presentation by Jawad. Thank you. इसका जो मेरे शुरू में ना पहले हम जब मैं पाकिस्तान यहाँ आया तो बहुत कम डॉक्टर थे पाकिस्तान से यहाँ 1971 में हमने सोचा कि भाई 10 साल होने वाले हमारे ग्रेजुएशन के आई ग्रेजुएट 1963 तो 10 साल हो जाएंगे 73 में तो गेट टुगेदर करनी चाहिए कि देखते हैं कितने लोग कितने हमारे क्लासमेट अमेरिका में हैं 19 के करीब मेरी क्लासमेट अमेरिका में थे इस साल तो हमने कोई कहा कि लेट्स गेट टुगेदर तो जुलाई 4th 1973 में हमने नियाग्रा फॉल में एक मीटिंग की जुलाई 4th को और उस मीटिंग में फिर इतना सब ने इतना एंजॉय किया कि ये फैसला किया कि अब पूरी अलमनाई कॉलोनी बनाई जाए कॉलेज की तो इट टुक अनदर 2-3 years तो 1972 years yes 1975 में ऑफिशियली हमने उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और फिर किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज अलमनाई एसोसिएशन बनाई बहुत अच्छा लग रहा है अच्छा वेल अरेंज केमकाना का प्रोग्राम है वी आर एंजॉयिंग इट और जवाद को हम सुनना चाहते थे काफी दिन से तो वी आर गेटिंग द प्रिविलेज ऑफ listening to him again. Alhamdulillah, we have really worked very hard and I'm glad it went very well. Thank you for being here and taking the time for us. तो आप बताइए कि कैसा लग रहा है आपको ये इवेंट आज का? बड़ा अच्छा लग रहा है जी जब मैं अमेरिका में आता हूँ और परफॉर्म करता हूँ और लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा तादाद में आते हैं और इन्जॉय करते हैं महसूस होते हैं तो बहुत अच्छा फील होता है और स्पेशली आप इतनी दूर से आएँ और लोगों को एंटरटेन करने आए और लोग एंटरटेन हो जाएं तो आपको लगता है जैसे आपका फ़र्ज अदा हो गया सफीर पाकिस्तान में एक पुराना प्रोग्राम है मतलब बड़ी देर से चल रहा है और मैं इसके लिए दुआ और नेक तमन्नाएं जो है वो दे सकता हूँ तो आप कुछ सफीर पाकिस्तान के लिए कुछ कहना चाहेंगे हमारे नाजरीन को ज़रूर थैंक यू वेरी मच वकार भाई के लिए यही कहना चाहूँगा कि उनका प्रोग्राम सब देखते हैं और अपना वो मिशन जारी रखें बेस्ट ऑफ लक अपना के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट Dr. Asad Kamar se, all the way from Florida, he came here to Dallas. Welcome to Dallas. Thank you very much. And welcome on Safir Pakistan. Thank you so much for being here. आज का इतना ज़बरदस्त फंक्शन आपको कैसा लग रहा है? I really liked it. I think it was very well organized. King Edward की alumni का था आपको मालूम है along with the North Texas chapter. So I think they did very well. They certainly should be commended on this. तो आप कुछ बताइए कि हमारे नाजरीन को कि आप अपना के प्रेसिडेंट के लिए क्या आपके कुछ गोल्स हैं जी देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच बेसिकली प्रमोट्स हेल्थ and beyond that being a professional organization it also promotes charitable causes as well as community work or obviously it promotes bilateral relations between United States and Pakistan in many different ways. So as far as the presidency of APNA is concerned, it's certainly not a paid job. It's an honor to be the president of APNA, but what you basically are doing is delivering something to APNA. You're not taking something from APNA. And in delivering whatever you deliver to APNA, you basically are looking at the membership and you're telling them what your manifesto is. And then the membership decides whether your thoughts or ideas are congruent with their dreams and aspirations. And if they are, they will select you. And if they don't, then obviously you don't become the president and you still continue to do good work. So my take on this is that I'm offering myself to APNA and to the membership.
And if my ideas are acceptable to them and they are galvanized and excited about those ideas, then they will support me, and inshallah I'll get the chance to represent the organization. And if it seems like, you know, my ideas are not congruent with the majority, then I'll still continue to do whatever I can do, good work for the organization in my capacity. क्या आप डिफरेंट करना चाहते हैं जो अब हो रहा है अपना में, क्या आपको लोग वोट दें? एक तो मैंने कई मरतबा कैंपेन के दौरान ये कहा है, और उससे पहले भी मेरी ये ख्वाहिश रही है कि अपना शुड रियली क्रिएट ए हॉस्पिटल, अ फ्लैगशिप हॉस्पिटल इन पाकिस्तान, और उस इंस्टीट्यूशन के थ्रू एक तो हमें मौका मिलेगा टू रेज द बार ऑन हाउ वी प्रैक्टिस मेडिसिन इन पाकिस्तान, गवर्नमेंट सेक्टर में भी एज वेल एज इन प्राइवेट सेक्टर, और उससे एफिलिएटेड मेडिकल स्कूल होना चाहिए, उससे एफिलिएटेड ऑल्सो वी शुड हैव अ नर्सिंग स्कूल, और उसमें ऑफिस होना चाहिए अपना का डिज़ास्टर रिलीफ का, कि जब भी कोई पाकिस्तान में सिचुएशन हो, whether these are floods or earthquakes or whatever natural disasters, and अपना wants to carry out its humanitarian work, तो वो उस ऑफिस के थ्रू किया जा सके. The other thing I think which is extremely important is to look at the responsibilities, I believe, of the membership also, जो मैं आज बात कर रहा था थोड़ी देर पहले. My message to the membership is to please spend some time in educating themselves about the different choices available to them, and really utilize this vote with responsibility, not just, you know, on their mere perceptions of different candidates, or depending upon friendships or cliques, or the fact that a candidate belongs to a certain alumni, or a candidate, you know, is from a certain part of Pakistan or speaks a certain dialect or a language, which is unfortunate, and it has been happening in the past. Well, today's program was very, very good. We really enjoyed having a company of a lot of our friends and other people from around the country. And the salient which I really, really enjoyed today was the speech from our keynote speaker, Jamal Hamdani. And I would like to echo one of his message, I think, for everybody, that we should need to work together in such a way that the success of other people should also please us just as much as the success of ourselves. And that's really a message which I would like to people to take to the heart, that we should all like to make each other successful. जो मैं न सिर्फ अपना का पास्ट प्रेसिडेंट हूँ, बल्कि मैं कैमखाना का भी प्रेसिडेंट रह चुका हूँ 1981 में. कैमखाना जो है वो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के लिए बहुत काम करती है, और कंप्यूटर लैब्स वगैरह उसकी के सिलसिले में ये ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन था यहाँ पर. सफीर पाकिस्तान देखते हैं आप? जी हाँ. सफीर पाकिस्तान के बारे में कुछ बताएंगे? मैं वकार साहब को बहुत पहले से जानता हूँ, और सफीर पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है. असली मानों में ये सफीर पाकिस्तान है यहाँ. मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत इंजॉय किया. इट वाज रियली फन. Thank you, Anjum. Thank you so much. It was such a wonderful evening. I had a great time. Ali Jawad is a great singer, and I'm so glad that I was able to spend the evening with all of you today. The program was excellent. बहुत मजा आया सबसे मिलके भी, और सब हर चीज़ अच्छी. It was a very good program. बहुत अच्छा था. हम तो खैर दिन में भी यहाँ पे थे. CMEs थी, वो भी बड़े अच्छे थे. Lectures were organized very well. The host committee did a very good job. और अभी का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा था. स्पीकर्स वर वेरी गुड, एंड इट वाज अ वेरी प्रोडक्टिव एंड वेरी इंसाइटफुल प्रोग्राम. प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है, हमने बहुत एंजॉय किया है. और जवाद का गाना खास तौर पे. दिस इज़ द एंड ऑफ द प्रोग्राम, बट इससे पहले और बहुत सी एक्टिविटीज़ थी, जैसे CME था और दूसरे और प्रोग्राम्स थे. दे ऑल वेंट वेरी वेल. I grew up with this King Edward family and with this program, so it's coming home for me. बहुत अच्छा लग रहा है. जवाद साहब सिंग कर रहे हैं, मजा आ रहा है. और आपको शायद अवार्ड भी मिला है, तो हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आज आपने फिर कौन सा अवार्ड जीता है. जो अवार्ड जो मुझे मिला है वो माय चेयरमैन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज कैमखाना का है. Congratulations to you. और I understand that you are a सफीर पाकिस्तान अवार्ड recipient as well. तो इस साल आपको मालूम है जैसे कि डैलस में सफीर पाकिस्तान का अवार्ड सेरेमनी होने जा रही है, तो आप नाज़रीन को क्या बताएंगे उसके बारे में? ये बहुत अच्छी सेरेमनी है. इसको मैंने अटेंड किया था, बहुत मज़ा आया था.
ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मेरे ख्याल में इसमें शमूलियत होनी चाहिए. Thank you so much for being with us today. Thank you. We had a great time tonight, and we appreciate your presence. You worked very hard, and you did a wonderful job in covering the program. Well, thank you so much. And are you excited about award night? You are in the host committee. Basically, you are the chair. So what do you think about Safir Pakistan chose Dallas this time for awards? I think Safir Pakistan is an exceptional program. I think Waqar does an incredible job. I think that it would be a very successful program, and I wish everyone who is participating, I wish them to show up and be present for the program, and anything that I can do, I will. I'm really looking forward to it. It's going to be a very exciting event. I hope all the Dallas crowd will be there to support us and our efforts, and all the nominees who are involved. We're looking forward to showing what's the accomplishments of Pakistani Americans here in Dallas. वो लम्हा आप पहुंचा है जिसका आपको इंतजार था. मेरी अखियां चुमकी ना उड़ी गवे, मेरी अखियां चुमकी ना उड़ी गवे, ओ या दमियां जुदाइयां झुमके ने सारे मेरी अखियां चुमकी ना उड़ी गवे. बुल्लो 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 वो लम्हा आ पहुंचा है जिसका आप सबको इंतजार था. सफीर पाकिस्तान अवार्ड नाइट 2012. मलबाबरा रे आया कहाँ से ये हौसला रे. उड़ने लगा क्यों मलबाबरा रे आया कहाँ से ये हौसला रे. और पिया उस्ताद दिलशाद खान प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड विनर वायलिनिस्ट. सब कुछ DFW मैरियट होटल, ब्रोथ हफ्ता मई 19, 2012. हमें आपका इंतजार रहेगा. नाज़रीन, तो वक्त है आपके दिलचस्प सेगमेंट लोकल ग्लोबल. नाज़रीन, लोकल ग्लोबल में मुख्तलिफ स्टोरीज, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हम लेकर आते हैं. अगर आप समझते हैं आपके पास भी कोई रिपोर्ट्स है तो हमें ज़रूर उसको बाहम पहुँचाएँ. हम उसको एयर करेंगे ताकि तमाम लोग आपकी रिपोर्ट्स और आपकी एक्टिविटीज़ को इस प्रोग्राम के ज़रिए देख सकें. नाज़रीन, जब हम जानते हैं कि इलेक्शन बड़े ज़ोर शोर से जारी हैं और दो जो कैंडिडेट हैं वो ऑलरेडी मुंतखब हो चुके हैं अनअपोज, जिसमें एक हैं जनाब हमारे बहुत ही हरदिल अजीज़ प्यारे दोस्त जनाब डॉक्टर तारिक शाहाब वर्जीनिया से. वो अनअपोज आ चुके हैं एज ए ट्रेजरर की पोजीशन पे.
बड़ी अहम कलीदी और इम्पॉर्टेंट पोजीशन है ये, क्योंकि आपको पता है कि जहाँ पैसों का मामला आता है, लेन देन का मामला आता है, वहाँ बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है। मुझे उम्मीद है कि जनाब तारिक शहाब साहब इस म्यार पे पूरा उतरेंगे कि वो एक बेहतरीन फाइनेंशियल निज़ाम अपना को दे सकें। इसके अलावा हमारे एक और अजीज़ दोस्त हैं जनाब फरीद काजी साहब, जिनको मैं कई बार इंटरव्यू कर चुका हूँ। आई थिंक मुतअद्दिद बार वो इस स्क्रीन पे आ चुके हैं। फरीद काजी नाम है, ऑनकोलॉजिस्ट हैं, वो एटलांटा जॉर्जिया से उनका ताल्लुक़ है। वो भी अनअपोज आ गए हैं और उन्होंने प्रेसिडेंट के लिए भी ऐलान किया है कि आइंदा वो 2015 में अपना के लिए सदर के कैंडिडेट होंगे। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनको और हौसला दे और लगता है कि और लोग भी मैदान में कूदेंगे। नाज़रीन, तो बात हो रही थी डिबेट की रिचमंड वर्जीनिया में। आइए आपको ले चलते हैं रिचमंड वर्जीनिया, जहां शादिया जो है उस चैप्टर की प्रेसिडेंट है और बहुत अच्छा खूबसूरत और हसीन प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था। और वहाँ हमारे सफ़ीर पाकिस्तान के एडवाइज़र भी हैं, समदानी साहब रहते हैं वर्जीनिया में, वो भी वहाँ मौजूद थे। बड़ी खुशी हुई और तीनों कैंडिडेट ने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को पेश किया, लेकिन ज़्यादातर क्रिटिसिज्म का शिकार हुए जनाब आसिफ रहमान साहब फाइनेंशियल सिलसिले में, जिस पे जनाब परवेज़ इकबाल साहब ने ताबड़तोड़ हमले किए और कहा कि गरीब मुफलिस व नादारों की रकम जो है वो इवेपोरेटेड हो गई है, गायब हो गई है, उसका कुछ पता नहीं है। और मैं बताता चलूँ कि उस प्रोग्राम में सबसे हर दिल अजीज़ शख्सियत जो है पहचानी गई, जानी गई, उनका नाम है जनाब डॉक्टर असद कमर, जिनको बहुत लोगों ने पसंद किया। अब देखना यह है कि आने वाले इलेक्शन में कौन जीतता है और किसको अपना के मेम्बरान जो है मुंतखब करते हैं, ये उनका अपना फैसला होगा। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। Welcome to this first annual banquet of Apna, Virginia. We have had meetings before, but this is our first annual formal dinner that we arranged. And we have this chapter for 4 years now. We started 4 years ago, and I'm the 5th president. And every year we are becoming stronger, and more people are joining us. And our local chapter has helped us come together as a community. And it has been very good for all of us here. And all of us have worked together for our community here and for people of Pakistan back home. Tonight, in the presidential race, we have 3 candidates. They are very experienced. They are dedicated, determined. They will compete, and they will fight to finish. They will win or lose until the last votes are cast. They have played a leadership role in Apna, both at local and at central levels, though. They have they've held presidential positions, and they have headed activities, educational and non-educational, both in the U.S. and in Pakistan. They have numerous certifications and distinctions. They are among the best of the best. Keep it brief, Asad Kamar, cardiologist in Florida. Love you all. Thank you for being here. And as we go along, you'll get to know me, and I'll let you know what I have done in the past and what I intend to do in the future. Thank you. My name is Asif Rahman, and I'm an investigative cardiologist from New York. I've been involved with Apna for over 10 years, and I served as a treasurer last year and secretary this year, and I'm candidate for president-elect. Thank you. My name is Dr. Parvez Iqbal. This is my card. I'm a pulmonologist. I would like to ask you that what if, let's say you are given a hypothetical scenario that you are elected as president, what would you think that, what would be your legacy once you're done with your presidentship? What do you think, what would be your legacy that we would remember you, or what have you done? I would love to have a legacy which says 10 years from now, 20 years from now, that there used to be Dr. Iqbal, who took Apna from 2,500 to an increase it to 10,000. I have the same legacy in New York. I took New York chapter when it was 60. Under my leadership, it grew to 400, and actually more than 400 now members. And that's the legacy I'm going to live with in New York, and that's exactly I want to do in Central Apna. Cardiologist
tend to lean towards the presidency for Apna. Why is that? If I didn't love cardiology, and if I didn't love cardiologists, then I wouldn't be a cardiologist. So I think cardiologists are very driven people. They're very motivated. I think they are very result-oriented. I think they want to lead. They want to excel. Not that other subspecialties don't want to do that. So I think there is a particular kind of personality which takes you or drives you into the field of cardiology. I do not believe that we need thousands of new members. We need engaged membership. We need people who are ethically and morally sound, who want to do the right thing. I do not believe Pakistan is teeming with millions and millions of people. We are not in a war for numbers. We are in the war for quality and engaged people who take ownership. Just like into a nation, they should take ownership into an organization. Let's say all three of you are such real candidates, well qualified, well trained, and well motivated. What would you say if it becomes a tie between two candidates? What would be your line of action? I think our constitution says that if there is a tie, there will be a re-election, and it has happened in the past. So we have to follow our constitution. It's written in the constitution. I think there was 2 to 3 years ago, there was a candidate, Zilaf Munir and Mahmood Alam. They had one election. The election came into very close with the difference of 4 votes. They went back and they had re-election, and it was a tie. And there was going to be a third election. That's what your constitution says. But I think the candidates, in a good spirit and for the betterment of the organization, they decided that one candidate withdrew, and then Dr. Mahmood Alam served, and the other candidate came subsequently in the following year. But I don't think it was a deal. I think it was in a good spirit, and that's what we should do. And if there is something like that, we should follow the constitution. Whatever you want to do, whether to serve our community here as doctors, as well as non-doctors in this country, or you want to do some social work for the Pakistan, for back home, the country which gave us so much, that will be multiplied by 4 times. But what exactly do you have that would motivate more people to join Apna? Managing Apna or doing the work for Apna is not a rocket science. And second thing, just the way there is no shortcut to wisdom, there is no shortcut to picking up the phone and reaching out. From the time I took the leadership, I started calling the phone. This is a beautiful invention. We have to make use of that. Telephone, reach out to people. Honest to God, we are a beacon example in New York that within 2 years we grew from 60 to 400, more than 400 registered members. So reaching out. Number 2, chapters have to be empowered. Do you see Apna as a scientific organization or as a quasi-religious organization? Apna has allowed our religion to go too far into the organization. I think it is unacceptable. We must imagine for a moment if we are Hindus or Christians and members of Apna coming from medical school in Pakistan, we are sitting in one of the meetings, and if the meeting starts with the recitation of the Quran, I think I would, as a Christian or a Hindu, feel a little uncomfortable. I would feel as if my feelings were not taken care of or were not accounted for. I think when we write for a prayer break, it is better to write for a meditation break, where even an atheist or an agnostic or a Jew or a Christian or whoever he or she is can go and spend time in whatever way they can be, and so we become all inclusive. Apna is a non-religious, it's a secular organization. But I strongly believe that secular doesn't mean a religion. Secular means that you respect the people, what their beliefs are. I think if there is a meeting and if there is a break in meeting and if people decide to go and pray, I think they have a right to do. And if the people don't want to pray, they have a right to do. Our other religion, and I think I will leave up to that. Apna is a pretty secular organization.
And if you invite this circular, because most of us are, again, I agree with my friend Dr. Asif. We received a letter from BOT recently about the mishandling of the funds of Apna during this tenure. My question is that how do you guys look into the problem? First of all, that letter was absolutely meant for a very select group of people in Apna. Nobody in the general membership was supposed to know about it, because every single allegation or possible allegation or even any perception of impropriety was supposed, and by the way, I have nothing to do with that, but I will just as a candidate tell you, was not supposed to be leaked out. Unfortunately, a group of people who had an interest in tarnishing that member, which is standing right here on my right hand, who actually I'm competing against, and so I should actually be happy that his, he is being tarnished. But I take an offense to how it was done. Some people leaked that letter which was entrusted to them, to the general membership, and it's a heinous crime, ethical, moral, and of every other kind. That letter shouldn't have come to you. That letter also came to me, and I, of course, trashed it. There are issues with whatever happened last year. The Treasurer's report has come out. I honestly don't know the details. First of all, we know that there was no misappropriation. Nobody took money away. Nothing was done other than the expenses were more than the money which was collected. And I may be wrong, because I'm not in any way a party to that. But that letter should not have come to you. I think that is an even bigger issue than the fact that we spent $180,000 more than what we should have spent. When an accountant, hired accountant, looked into that for 4 months, and finally a Treasury report came out, and this was a shocking news, embarrassing news to whole Apna, that during the whole year, there was no real kind of accounting done. There was no oversight on the accountant. There was no budgeting of the conferences, of the meetings, and there was $181,000 missing. It's not that it has been spent more than what it was, as my friend Dr. Asif said. Actually, what has happened is $181,000 which has been collected from the donors for the noble cause, for the social work, the disaster relief committee, like do this thing good in Pakistan, do this thing. That money is missing from that social work disaster relief committee. That money was given by noble people like you, donors, to put this money into different noble causes in Pakistan. That the social welfare account at the beginning of the year was $200,000. We gave $260,000 out, and at the end of this year there is $200,000 in social welfare account, and 1.1 million was distributed in Pakistan. But the thing is that when there is a lot of transactions are done, when people are donating either by check, by credit cards, or by banks, there are multiple accounts in Apna, and that money goes into different accounts, and the accountant or bookkeeper over there identifies money, and then they move it to one account or other account where it belongs. So I give you my word that there was not a penny missing or misused. Yes, that money you might have given for one project and it might have been used for other project, but not. And this was very clear in President's letter. Every money which is being spent is either social welfare committee chair, executive committee, more than $10,000 you cannot send anywhere unless it is approved by board of trustees. So people who have absolutely no experience, no, it's all politics, it's an election, and that's why there was an anonymous letter, why there was a name not written, and why there was a budget of this year which is now circulated outside have a different figures than what it was approved in Las Vegas meeting. वो लम्हा आप पहुंचा है जिसका आपको इंतजार था। मेरी अखियां
जुदाइयां जुमगन सारे मेरी चुमकी ना पीक में बुल्लो 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 वो लम्हा आ पहुंचा है जिसका आप सबको इंतजार था। सफीर पाकिस्तान अवार्ड नाइट 2012। आया कहाँ से ये हौसला रे उड़ने लगा क्यों मलबाबरा रे आया कहाँ से ये हौसला रे उड़ पिया उस्ताद दिलशाद खान प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड विनर वायलिनिस्ट। सब कुछ DFW मैरियट होटल, ब्रोथ हफ्ता मई 19, 2012। हमें आपका इंतजार रहेगा। नाज़रीन, आप सफीर पाकिस्तान देख रहे हैं। अपना पसंदीदा प्रोग्राम जियो से 745 चैनल है और देखते रहिए और दूसरों को भी देखने की तलकीन कीजिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि सफीर पाकिस्तान आपके बिजनेस, आपकी इंडस्ट्री, आपके किसी प्रोग्राम को कवर करे और मुतारिफ कराए, तो यूर मोर दैन वेलकम। सफीर पाकिस्तान आपका अपना प्रोग्राम है, जियो टीवी आपका अपना प्रोग्राम है। जियो टीवी पे कोई आप एडवर्टाइज़ करना चाहते हैं, इश्तिहार देना चाहते हैं, तो डायरेक्ट आप नसीर राना साहब से रब्ता कायम कर सकते हैं। वो हमारे एडवर्टाइजिंग के डायरेक्टर हैं पूरे अमेरिका के, वो आपकी मदद कर सकते हैं एडवर्टाइजिंग के सिलसिले में, तो उनको कॉल करना मत भूलिए। और अगर आप चाहते हैं सफीर पाकिस्तान में आपकी कवरेज की जाए, तो हम हाजिर खिदमत हैं, मौजूद हैं आपके लिए। नाज़रीन, सफीर पाकिस्तान आपकी आवाज़ और आपकी पहचान बनता जा रहा है, बल्कि बन गया है। और मैं बता चलूँ कि अमेरिकन पाकिस्तानी CEO फोरम बहुत जल्द एक डे ऑन द हिल कर रहा है, द रिवाइवल ऑफ पाक US रिलेशनशिप, अबाउट विद इन 2-3-4 वीक इज गोना बी ऑन द हिल। इसके साथ ही आपका मेज़बान वकील खान आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।